Next problem, two parallel plate capacitor of capacity 1 microfarad and 5 microfarad are separately charged with 100 volt battery. After being fully charged, positive plate of one is connected to negative plate of the other and vice versa. Find the final charges on each capacitor and total loss of energy in the capacitor. This has been asked in Roorkee 1993. तो देखिए सिमिलर टाइप भी प्रॉब्लम है ये, लेकिन यहाँ पर क्या है, इसके पहले जो डिस्कस किया गया था यहाँ पर है कि अपोजिट पोलरिटी ऑफ चार्ज कैपेसिटर की अपोजिट पोलरिटी को एक साथ ऐड करते हैं, राइट। तो सबसे पहले गिवन है C1 इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैराड, हियर C1 इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैराड, C2 इज इक्वल टू 5 माइक्रोफैराड and applied charging potential is 100 volt, right। तो इनिशियल चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या होगा, इनिशियल चार्ज ऑन कैपेसिटर Q1, अगर मान लीजिए कि C1 कैपेसिटर पर चार्ज Q1 है तो Q1 क्या होगा, Q1 विल बी इक्वल टू C1 इंटू V विच इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैराड इंटू 100 वोल्ट, राइट। So this will be equal to 100 microcoulomb. This will be 100 microcoulomb, right? Similarly, charge on other capacitor, उसको Q2 डिनोट करेंगे, तो Q2 कितना हो जाएगा, that will be equal to 5 microfarad into 100 volt. So this will be equal to 500 microcoulomb. Now these are the charge on both capacitor. Q1 charge on capacitor C1 and Q2 is charge on capacitor C2. Now what is the potential energy stored in electrostatic potential energy stored in capacitor 1? अगर उसको U1 कहें तो U1 will be equal to half C1 V square, right, and this will be equal to, and U2 is equal to half C2 V square, right। So हम ये कहें कि टोटल इनिशियल एनर्जी UI, therefore UI will be equal to U1 plus U2 which is equal to half C1 plus C2 into V square, right, which is equal to half C1 plus C2 कितना हो जाए, देखिए 1 माइक्रोफैराड and 5 माइक्रोफैराड, this is 6 माइक्रोफैराड into 100 square, right, 6 माइक्रोफैराड into 100 square, and this will be 3 into 10 to the power minus 2 joule. This is 10 to the power minus 2 joule. Now this will be the initial energy with the capacitor. Now problem में दिया गया है कि after being fully charged, positive plate of one connected to negative plate of the other. एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से कनेक्ट होगा, तो बताया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के साथ में कुछ चार्जेस न्यूट्रलाइज करेंगे, तो व्हाट विल बी नेट चार्ज आफ्टर connecting capacitors with opposite polarity, Q net, what will be Q net, या Q total will be equal to Q total will be equal to, देखिए हमने आपको क्या बताया कि दिस इज Q1 माइनस Q2, इसमें से जो ज्यादा हो, राइट, तो दिस इज 500 माइनस 100, राइट, तो दिस विल बी 500 माइनस 100 माइक्रोकूलम विच विल बी इक्वल टू 400 माइक्रोकूलम, राइट। दिस विल बी द टोटल चार्ज. Therefore what will be common potential? Therefore V common potential will be total charge divided by total capacitance,
which will be equal to 400 divided by total capacitance is 1 plus 5, that is ये माइक्रो कूलम में है और वो हो जाएगा 6 माइक्रो फराड। माइक्रो माइक्रो कैंसिल हो गया, सीधे ही आ जाएगा वोल्ट में, तो दिस विल बी 200 बाई 3 वोल्ट। देखिए दिस विल बी इक्वल टू, दिस इज 200 डिवाइडेड बाई 3 वोल्ट, राइट। ये आ गया इसमें। अब देखिए अब हमको क्या करना है कि मैं नाउ so we have calculated common potential, right। अब देखिए अब इसके बाद में what will be, अब this is the common potential, now what will be final charges on plates, final charges, therefore final charges q1 dash will be equal to c1 into v, so this will be equal to 1 microfarad, this will be 1 into 200 by 3, so this will be 200 by 3 microcoulomb. Final charge, this will be 200 by 3 microcoulomb, and q2 dash will be equal to 5 into 200 by 3, 5 into 200 by 3, so this will be 1000 by 3 microcoulomb. Now this is the final charges on both the capacitor. So here what will be final energy, therefore UF, बोला कि find the final charges on each capacitor and total loss of energy in the capacitor. Now what will be UF, this will be equal to common potential तो ही है half C1 plus C2, this will be half C1 plus C2 into Vc square, right। तो half C1 plus C2 is equal to 6 माइक्रोफराड में है, राइट, माइक्रोफराड इंटू, देखिए Vc कॉमन पोटेंशियल इज 200 बाई 3, दिस इज 200 बाई 3 का होल स्क्वायर, राइट, 200 बाई 3 का होल स्क्वायर। तो इससे जो एनर्जी आएगा दैट विल बी 4 बाई 3 इंटू 10 टू द पावर -2, राइट, जूल, क्योंकि ये माइक्रो में है, so this will be the final energy. Therefore what is the loss of energy, right, therefore loss of energy will be equal to UF minus UI, right, U final is equal to 4 by 3 into 10 to the power -2 joule. U initial, okay, U initial is 3 into 10 to the power -2 joule, right. Therefore this is 4 by 3 minus 3 into 10 to the power -2 joule, which will be equal to 4 minus, देखिए 3 जो 9, 4 minus 9 is equal to -5 by 3 into 10 to the power -2 joule, right. This will be 5 by 3 into 10 to the power -2 joule. This will be loss in energy. So again this loss in energy, loss of energy is negative. इसका मतलब कि in this process energy will be lost. Loss of energy negative है, इसका मतलब कि final energy is less than initial energy. Okay, thank you.